I've been talking to Sam, and I made a point to him in the car, and he said, "Oh, I had never thought about that." You're all non-resident Indians. The Congress movement, the original Congress movement, was an NRI movement. The Congress movement, the original Congress movement, was an NRI movement. Mahatma Gandhi was an NRI. Mahatma Gandhi was an NRI. Jawaharlal Nehru came back from England. Ambedkar, Azad, Patel. These were all NRIs. These were all NRIs. भाइयों और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। तो 1200 किलोमीटर खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। Of course, I lost my father, and for me it was a very difficult time. You have a father? He's alive. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? மத்தியில் இருக்கிற அரசானது விவசாயிகளுக்கு ஒரு மந்திரி இருக்கிறார்கள், அங்கே அமைச்சரவை இருக்கிறது, ஆனால் மீனவர்களுக்காக ஏன் இல்லை? Do they agree with what I am saying? நீங்கள் தலைவர் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? When we have an issue of farmers, we go to the ministry that belongs to the farmers. விவசாயிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் மத்தியில் இருக்கிற அந்த துறையினுடைய அமைச்சரை சந்திக்கிறார்கள். We go to the agricultural minister. அவர்கள் விவசாயத்துறை அமைச்சரை, மத்திய விவசாயத்துறை அமைச்சரை சந்திக்கிறார்கள். But when farmers have an issue, they do not have a minister to go to. ஆனால் Echoing around these walls, fighting to create a song. இதே மாதிரி தான் இருக்குது. கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது. எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க. அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா? Hello, we look at sir, at that time during cyclone, sir, river cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is not right. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है। और आप 3 खेती के बिल लाए जिससे ये पूरे खेती के सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to that. Of India occurring today. With extensive privatization, the reservation for women, gender minorities and OBCs, Dalits, disabled will definitely be taken away. This will again create a male-dominated society where myth of meritocracy will take away our chances for upward mobilization. What do you expect us to do, and how will you spread this awareness in your propaganda? Because it's highly time women start being political. With elections coming, we need to know who we must vote for. We need to know which party is anti-women
tampering with reservations, supporting the rapists, arresting women and sexually assaulting them in prison. We need caution about that party. So what will you do now about this? Now, first of all, you see, this is not a political question. This is a fundamental question. This is a question that she's asking about future. She's saying, if 3 or 4 big companies run this country, what will be my future? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे बोल हाँ Suppose I want to start a business. How will I be able to start a business if 2 or 3 or 4 huge companies own everything in India? So this is a fundamental question. This is not a political question. This is an economic question. This is a social question. This is multiple different types of questions. So the first thing, 3 new farm bills that have been passed. They are basically going to destroy Indian agriculture and hand Indian agriculture to 3 or 4 business people. Many of your parents here will be farmers. They will be devastated by these 3 laws. We are fighting these 3 laws. And the same was done with demonetization. The same was done with GST. And the same was done during Corona. You will remember that during Corona, बात पैसे की है। आप हमें साल की शुरुआत में ही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किसानों को और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? मैं अपने देश की रक्षा करता हूं और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा। अगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा मुझे कोई फर्क नहीं। Believe that they can suppress the emotions of the Tamil people. They believe that they can suppress the spirit of the Tamil people. I came to give them a message that nobody is going to suppress the Tamil spirit. And there is a reason for it. First of all, the Tamil spirit cannot be suppressed. And second of all, suppressing the Tamil spirit is the worst thing you can do for our country.